Hare Krishna. So we are very happy to welcome Maharaj by loudly chanting Hare Krishna mantra. Thank you, Maharaj, for coming. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. You all know this song. Yasomati Nanda. Yasomati Nandana Jaya Jagana Jaya Gokula Yasomati
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram Hare Hare. Damodar Maharaj, Krishna's father, was a landowner. He was a wife here. So Nanda Maharaj slowed the fans down too much noise. नंद महाराज जो कृष्ण के पिता थे वो एक जमींदार थे और साथ वैश्य समुदाय से थे. तो he kept many cows. तो उनके पास बहुत सारी गायें थी. Keeping cows is an important part of human culture, spiritual. तो गायों की देखभाल करना गायों को उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है. So he was a villager. He had not only ग्रामीण व्यक्ति थे, उनके पास कुछ नहीं बल्कि 9 लाख गायें थी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम It works only when you chant. माइक तभी काम कर रहा है जब माइक्रोफोन शुद्ध बात.
And so Krishna, he is known as, he has many names. One name he has is Makan Cho. तो कृष्ण जो है उनके बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम है माखन चोर। Nobody likes Cho. कोई चोर को पसंद नहीं करता है, But when Krishna is Cho, everybody likes Cho. लेकिन जब कृष्ण चोर हैं तो उस चोर को सब पसंद करते हैं। But he is his Cho for stealing Makan. तो वो चोर हैं क्यों? क्योंकि वो मक्खन चुराते हैं। Oh, butter, so nice. ओ मक्खन कितना अच्छा है, वाह। Butter, ooh. मक्खन, Yeah, some nice chapati and some butter. Acha. चपाती और मक्खन मिल जाए अच्छा है, Acha hai, acha. अच्छा है। Acha hai. Hey. But Krishna, he likes to play. कृष्ण जो है उनको खेलना बहुत अच्छा, And he likes to do things that people don't like. चीजें करना पसंद है जो पसंद नहीं करती, But because he's God, he can get away with it. लेकिन चूंकि वो भगवान है तो ठीक है, उनके लिए ये चलता है। If you steal something, oh, you're in trouble. यदि हम कुछ चोरी कर लेंगे तो हम तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। But if you appreciate Krishna stealing, then you actually are elevated to the spiritual platform. लेकिन यदि कृष्ण चोरी करें और आप उनकी प्रशंसा करो तो उससे आध्यात्मिक स्तर पे आप बढ़ते हो। So Mother Yasoda and Nanda Maharaj, they were always wondering, we got so many nice cows, so much milk, and very good milk, butter, cream, dahi, oh, so nice. Acha. महाराज आश्चर्य पड़ जाते थे कि हमारे इतनी सारी गायें हैं, अच्छी गायें हैं, इतना अच्छा मक्खन निकल रहा है, कितना कुछ अच्छा है। Why is Krishna going somewhere to steal butter? Everything is here. We have such nice butter. तो फिर कृष्ण को क्या जरूरत है इधर उधर जाने की, हमारे पास तो इतना अच्छा मक्खन है ना। So let's make butter even better. That way Krishna will not go out and steal. तो इसलिए काम करते हैं कि मक्खन को और अच्छा बनाते हैं ताकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। So they had 900,000 cows. उनके पास 9 लाख गायें थी। And they came up with a plan. एक योजना बनाई उन्होंने। And they took the best of the 900,000, the best 1,000 cows, and they milked those cows. तो 9 लाख गायों में से 1000 सबसे अच्छी गायों को चुना और उनका दूध निकाला। And they took the milk from those 1,000 cows and they fed it to the best 100 cows. तो उन 1000 गायों का दूध निकाला और जो है वो जो 100 अच्छी सबसे गायें थी उनको उससे पोषण किया। Took the milk from the best 100 fat cows and fed it to the best 10 cows. और जो 100 सबसे अच्छी गायें थी उनका दूध निकाला और उससे जो है जो सबसे 10 अच्छी थी उनको पोषित किया। And they took the milk from the best 10 cows and fed it to the best cows. और फिर 10 सबसे अच्छी गायों का दूध निकाल के सबसे अच्छी थी उसको पोषित किया। And that milk was used just for Krishna. और उस 9 लाख में से उस सबसे अच्छी गाय का दूध कृष्ण के लिए केवल उपयोग में आना था। So उस दूध की बहुत सुगंध थी। Maramganda. पद्मगंध। So nice. When the cow would give milk, the whole area would smell so sweet. जब गाय दूध देती तो आसपास के वातावरण सुगंध से भर जाता था। So Mother Yasoda would use that milk just for Krishna. तो माँ यशोदा। So one day, Mother Yasoda was churning butter. Ladies and other things. Then she's singing nicely. Oh, and she's singing about Krishna.
तो जब वो इस तरह कर रही तो जानते हैं महिलाएं अंगन पहन लेती हैं, अंगन चूड़ियों की आवाज आ रही थी और साथ में वो गा भी रही थी, But, बारे में गा रही थी। but on the stove, she put some milk for cooking. लेकिन चूल्हे पे कुछ रख दिया था पकाने के लिए, And she was making more. और वो जो है अपने काम में लगी थी। And Krishna, he saw his mother. He came out of the door and looked. Oh, Mata. लेकिन कृष्ण जो है बाहर आए और वो मम्मी सा I'm hungry. मेरे को भूख लगी है। Where's the pizza? No, not that. He wanted his mother's milk. पिज्जा कहाँ है? No pizza. मक्खन कहाँ है? माँ का दूध। So he jumped out of the room, ran onto his mother's lap, and jumped on, and she was so happy, and Krishna was so happy, and then she started feeding him. तो एकदम कमरे से बाहर कूद के माँ की गोद में And Krishna was so happy. कृष्ण बहुत खुश है Mother Yasoda was very happy, giving her milk to Krishna for some time. तो इस तरह से कुछ देर चलता रहा। But the milk on the stove started to think, you know, Mother Yasoda, she has so much love, and that means she has so much milk. I'll never get drunk. What is the use of my existence? तो लेकिन चूल्हे पे जो दूध उबल रहा था वो सोचा कि यशोदा मैया इतना प्रेम करती है तो क्या इतना दूध कृष्ण पी लेंगे तो मेरे को तो फायदा ही क्या। So the milk on the stove started to commit suicide. It was spilling over the pot and landing on the stove. इस तरह आवाज करने लगा। Can you translate that? चूल्हे पे गिर रहा था। Brahmacharis can only do certain things. So now Jiva Goswami, the foremost acharya, says that the milk was committing suicide. So this is his understanding. तो जो जीव गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी में प्रमुख आचार्य हैं, वो ये बताते हैं कि Because this is Vrindavan and everything in Vrindavan is personal. क्योंकि वृंदावन धाम है और वृंदावन में सब कुछ व्यक्तिगत है, सब कुछ का अस्तित्व है। Even the milk is a personality. तो यहाँ तक कि दूध भी जो है उसका भी एक अस्तित्व है। So Mother Yasoda is thinking, oh, milk is spilling over, so she takes Krishna, she puts him down, and she goes to take the milk. तो यशोदा मैया ने कहा कि दूध तो उबल रहा है, तो उन्होंने कृष्ण को नीचे रखा, वो दौड़ के गई और दूध चूल्हे को बंद करने गई। And Krishna starts to think, where did my mother go? She was just here. कृष्ण सोच रहे हैं, अरे कहाँ चली गई मम्मी, अभी तो यहीं पे थी। And he became angry. और कृष्ण को गुस्सा आ गया। So he decided to get some revenge. तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बदला लेना पड़ेगा। So he ran in the next room. अगले कमरे में गए कृष्ण, Took a rock. एक पत्थर उठाया, He threw it. और पत्थर फेंका, Hit the butter pot. और जाने लगा मक्खन के पात्र को, And the butter started coming out. वहां से मक्खन गिरने लगा। But Krishna couldn't get it. लेकिन कृष्ण को तो मक्खन मिलेंगे। So he took a grinding mortar. तो उन्होंने उखल उठाया। It was heavy. बड़ा भारी था। It's made out of cement. सीमेंट से बना हुआ उखल। And he dragged it over to where the butter pot was. खींच के उसको ले गए मक्खन के बर्तन के नीचे। And he stood on the grinding mortar and started grabbing the butter. And he was about to eat it, but guess what happened? और वहां उखल पे दौड़ चढ़ गए और मक्खन निकाल के खाने वाले थे,
फिर क्या हुआ? Monkeys, oh, monkeys are coming. बंदर आ गए सब तरफ से। So the monkeys were coming. बंदर आते गए आते गए। The chief monkey, his name is Dahi Loba. सबसे जो बंदरों का जो नेता था उसका नाम था दही लोबा। He's greedy for Dahi. दही के लिए वो लालची है। So he brought all his friends. तो सब मित्रों को मैं बुला लिया। And when Krishna starts eating butter, they all come to get some butter. जब कृष्ण खाने लगे मक्खन तो वो भी आ गए, हमको भी मक्खन खिलाओ। So Krishna is giving the butter to the monkeys. The butter's falling all over the floor. कृष्ण बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं और मक्खन साथ पूरा बहता जा रहा है। There's a mess in the house. घर पूरा उलट पुलट हो गया। And then Krishna starts eating some butter. फिर कृष्ण भी कुछ मक्खन खाने लगे। But he's worried his mother might be coming. चिंता भी कर रहे हैं, अरे मम्मी ना आ जाए कहीं। So he's looking this way now. इस तरह देख रहे हैं। And finally his mother comes. She looks on the floor, she sees all these butter footprints. तो देखा जमीन पे तो मक्खन से पाँव के निशान बने हुए हैं। Ah, that rascal. So she picks up a stick. तो एक छड़ी उठाई। Now she's not going to hit Krishna, but she wants to scare him. तो कृष्ण को मारने की तो योजना नहीं थी, लेकिन डराना चाहती थी। She comes into the room where Krishna is. कमरे में गई जहाँ पे कृष्ण थे। Krishna sees his mother. कृष्ण ने माँ को देखा। Jumps off the grinding water. एकदम छलांग लगाई उखल से। He starts running. दौड़ने लग गए। Mother Yasoda, she's chasing him. तो यशोदा पीछे थी। But he's fast. लेकिन कृष्ण तेज भाग रहे हैं। Nobody can catch Krishna. कोई कृष्ण को पकड़ तो सकता नहीं है। And she's big. She's got big breasts, big hips. She's trying to run. और यशोदा मैया का शरीर इतना भारी है, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, संभव नहीं होगा। कृष्ण को तो पकड़ पाएंगी नहीं। Now, while she's chasing Krishna, she has some flowers in her hair. तो जब कृष्ण के पीछे पीछे जा रही हैं, तो कुछ फूल हैं उनके बालों में। And the flowers, they start talking. और जो फूल है ना आपस में बातचीत करने लगे उस समय। Who is this Mother Yasoda? कौन है ये माँ यशोदा? She's chasing God and he's running. भगवान के पीछे दौड़ रही है और भगवान उनसे डर के मारे आगे दौड़ रहे हैं। He's God and he's afraid of Mother Yasoda. ये है भगवान और ये माँ यशोदा। So what are we doing on their head? We should be on their feet. तो हम उनके सिर में क्या कर रहे हैं? हमें तो उनके चरणों में होना चाहिए। So the flowers start falling off. तो सारे जो फूल थे वो नीचे गिरे। This is Jiva Goswami's explanation. ये है जीव गोस्वामी की व्याख्या। And she's running. और माँ यशोदा दौड़ रही। And Krishna is scared of his mother. और कृष्ण अपनी माँ से डर गए। How can God become fearful? भगवान कैसे डर सकते हैं? But he does. डरते हैं। In Vrindavan, he acts like an ordinary person. साधारण व्यक्ति की तरह। Although he's the Supreme Lord. हालांकि है तो भगवान ही। And he creates fear everywhere. और हर जगह वो उनके कारण डर उत्पन्न होता है। Srimad Bhagavatam says, the wind blows out of fear of me. भागवतम में भगवान बोलते हैं कि वायु जो है मेरे भय से बहती है। Death takes its toll out of fear of me. मृत्यु जो है वो भी मेरे भय से कार्य करती है। So Krishna is respected and feared by everything in creation. तो कृष्ण के द्वारा सभी भयभीत होते हैं और सभी उनका आदर करते हैं पूरी सृष्टि में। And now he's running away from his mother. वो कृष्ण दूर भाग रहे हैं। And he's not acting like he's fearful. He is fearful. ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं कि वो डर गया, वास्तव में वो डर गए। That's his pastime. ये है कृष्ण की लीला। And she's chasing him. She can't catch him. तो दौड़ रही हैं, लेकिन उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। Finally,
Krishna starts to think, my mother must be getting tired. आखिरकार फिर सोचने लगे कि हो सकता है यशोदा मैया थक गई हैं, थक जाएंगी। So he stops. तो वो रुक जाते हैं She catches him. और यशोदा मैया उनको पकड़ लेती हैं। You rascal. अरे बदमाश, How am I going to get my chores done with you making so much mischief? तो इतना सारा तुम शरारत करोगे, मेरा काम कैसे करूं? So she thinks, I'm going to tie him up. तो अभी इसको बांध देंगे। She gets a piece of rope. तो कुछ रस्सी लेके आती हैं And then she thinks, और वो सोचती हैं this grinding mortar helped Krishna steal butter. उसमें जो उखल है इसने मदद की कृष्ण की मक्खन चुराने में। So the grinding mortar should be tied up too. इस उखल को भी बांध देना चाहिए। So she ties a rope around the grinding mortar and she tries to tie it around Krishna, and she's about to tie the knot, but it doesn't reach. वो उखल में रस्सी से उखल को बांध के और उसी उखल से कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास करती हैं रस्सी, लेकिन 2 fingers too short. रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। So there's a lot of rope in the area. She picks up another piece, ties it to the first place, tries to tie Krishna again. तो बहुत सारी रस्सी तो वहां पे थी और रस्सी उठाई, जोड़ दी, फिर से कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। And then the ladies in the village come. और फिर गांव की महिलाएं आती हैं, They hear all the commotion. वो सारी घटना को सुन लेती हैं। And so they see Mother Yasoda is trying to tie up her son. देख रही हैं कि अरे यशोदा मैया जो है अपने बेटे को बांधने का प्रयास करती हैं। So they bring rope. तो वो भी रस्सी लेके आती हैं। Different color ropes for tying cows. अलग-अलग जो रस्सियां हैं अलग गायों को बांधने। So they give a piece of rope to Mother Yasoda. यशोदा मैया को देती हैं। She ties it onto the other rope. तो दूसरा रस्सी को जोड़ के Tries to tie Krishna. कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं। Too short. लेकिन फिर भी Push another rope. छोटी, फिर और रस्सी, Too short. Gets more rope. और रस्सी, Too short. फिर भी छोटी। She's laughing at the same time. She can't figure out what's happening. एक तरफ तो हंस भी रही हैं लेकिन साथ में समझ नहीं पा रही हो क्या। And then nothing's changing. She can't tie him up. कुछ बदलाव हो ही नहीं रहा है, बांध भी नहीं पा रही हैं। Then little Radharani comes. तो वहां पे राधा रानी आती। She's a little girl. राधा रानी उस समय छोटी बालिका, About 3 years old. 3 years old. 3 साल। Oh, and she sees, oh, Krishna needs to be tied up. और वो देखती है, अरे कृष्ण को बांधे जाने की जरूरत है। So she has a little tie in her hair. She takes the tie out and says, Mataji. तो उनके बालों में कुछ रहता है रस्सी, और वो रस्सी को देती है कि माता जी आप। And also Yasoda takes that little tie, ties it onto the rope, and Krishna's caught. और वो रस्सी जब जोड़ के उसको बांधती है यशोदा मैया, तब कृष्ण बंध। So when we worship Krishna this month, it's Radha Damodar. इसलिए इस महीने में हम कृष्ण की पूजा करते हैं राधा दामोदर के रूप। And this is the explanation by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati explains how Krishna got tied up. और ये जो व्याख्या है कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज बताते हैं कि कैसे कृष्ण इस तरह से बंध गए। So Mother Yasoda leaves. यशोदा मैया फिर चली जाती है वहां से। Now there's one very philosophical, very spiritual principle that is involved with that pastime. तो एक यहाँ पे बहुत ही एक सैद्धांतिक एक विशेष सिद्धांत है जो इस लीला में जुड़ा हुआ है। It says the 2 inches or 2 fingers represent 2 things that devotees need to have to catch Krishna. तो ये बताते हैं कि 2 अंगुल जो रस्सी छोटी पड़ रही है, ये 2 चीजें हैं जो भक्त के पास होनी चाहिए कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं। तो Sudha prema, एक तो है शुद्ध प्रेम, pure love, शुद्ध प्रेम, and Krishna's permission. और दूसरा कृष्ण की भी अनुमति होनी चाहिए। So he didn't give his permission तो कृष्ण until Radharani came. रानी नहीं आ गई। Radhe, Radhe, Radhe. And so this indicates that the devotee wants to catch Krishna, but he has to have pure love and he has to have
Krishna's sanction. तो इससे ये समझ में आता है कि भक्त जो है कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर शुद्ध प्रेम होना जरूरी है और साथ ही कृष्ण की भी अनुमति होनी जरूरी है। Oh, now Mother Yasoda goes and Krishna's tied up and he doesn't want to be tied up. तो यशोदा मैया चली जाती हैं और फिर कृष्ण को बांध के चली जाती है। कृष्ण सोच रहे हैं कि अभी मुझे बांधा क्यों। So Krishna calls his friends. कृष्ण मित्रों को बुलाते हैं। Hey, Sridham, Kinkini, Subal, come, untie me. हे श्रीराम, किंकिली, सुबल, सब आओ और मुझे खोल दो। So the cowherd boys come. सब ग्वाल बाल आ गए। They're expert at untying knots. उनको तो आदत है रस्सियां खोलने की, गायों को पालने वाले हैं, Because that's what they do. यही वो करते हैं। But they try to untie the knot. लेकिन वो खोलने का प्रयास तो किए, They can't. लेकिन खोल नहीं पा रहे। They all try. सबने प्रयास कर They लिया, don't give up so easy. इतना जल्दी वो भी छोड़ने वाले नहीं थे, But they can't untie the knot. लेकिन वो खोल ही नहीं पा रहे हैं। Why? क्यों? Because they're in Sakyaras and Mother Yasoda's in Vatsalyaras. So the notes, the love of Mother Yasoda is in Vatsalya and they're only in Sakya, so they can't untie her love. इसका कारण ये था कि जो ग्वाल बाल हैं वो सत्य रस में थे और यशोदा मैया थी वात्सल्य रस में। तो वात्सल्य रस जो कि सत्य रस से ऊंचा है, इसलिए वो खोल नहीं पा। So the cowherd boys go. तो वो सब ग्वाल बाल को चले गए इकट्ठे। Now Krishna's thinking, अब कृष्ण सोच रहे हैं, oh yeah, my devotee Narada Muni. ओ हाँ, मेरे भक्त नारद मुनि जो है ना, You know Narada? आप जानते हैं नारद मुनि? Narada Muni Vajjaytina Bhaktika Ramana Mahare. नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन। So he's always singing the glories of Radhika Raman. तो नारद मुनि हमेशा राधिका रमन की महिमा गाते हैं। So Krishna starts to think, Narada, he's giving me some seva. तो कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे हाँ, नारद मुनि ने भी मुझे कुछ सेवा दी है। But he's still he's tied up to the grinding motor. अभी भी उखल बंधे हुए हैं। And then he looks. फिर वो देखते हैं, In a distance away, there's two big trees. थोड़ी दूरी पे दो बड़े बड़े पेड़ हैं। They're called Arjun trees. उनको कहा जाता है अर्जुन वृक्ष। If you've seen an Arjun tree, they're big. देखा है अर्जुन वृक्ष एकदम बहुत विशाल। And they were close together. और वो दोनों आसपास में थे। Now Krishna is still tied up to the grinding motor. अभी भी कृष्ण बंधे हुए हैं उखल से। But he runs. दौड़ते हैं एकदम दौड़ते 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 उखल के बीच में से निकले, उखल को लेके इतने पेड़ों के बीच में से अब पेड़ आराम से गिर पड़े। He left something out. So Krishna runs between the trees. The grinding mortar gets caught, catches the trees, and the trees topple over and fall like crisscross. तो कृष्ण जो है पेड़ को इधर दौड़ते हैं, उखल वहां फंस जाता है और दोनों पेड़ जो है एक साथ आराम के आवाज के साथ गिर पड़ते हैं और कृष्ण जो है उनके बीच में। And as soon as the trees fall, two beautiful demigods, all decorated with helmets and all kinds of jewelry, they come out of the trees. तो जैसे ही पेड़ गिरते हैं, उनके बीच में से दो बहुत ही अद्भुत देवता निकलते हैं, पूरा जवाहरात निकल के आते हैं। They offer their pranams to Krishna. कृष्ण को प्रणाम अर्पित करते हैं। Krishna blesses them. कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं। And then they leave. और फिर दोनों देवता चले जाते हैं। Who are these two big demigods? तो ये दो बड़े देवता कौन हैं? Nalakuvara and Manigriva, the sons of Kuvera, the richest of all the demigods. नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं जो सबसे धनी देवता हैं। So how can they get in the trees? तो पेड़ कैसे बन गए दोनों? That's the story. यही कहानी है। So one day they were in the heavenly planets. एक बार दोनों स्वर्ग में थे, कुबेर के पुत्र। The Ganga, she runs in the heavenly planets. She's called Mandakini. और गंगा जो स्वर्ग लोक में बहती है, उसका नाम वहाँ है मंदाकिनी।
So they were sporting with some ladies, तो वहां पे वो स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में लगे हुए थे and they were drunk. और पिए भी हुए थे। And then they took off their clothes. क्या बोलेंगे, मदपान कर रखा था। Yeah, and then they jumped into the river and they were playing with the ladies naked in the river. और फिर नदी में कूद गए और नग्न अवस्था में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में डूबे हुए थे। All of a sudden, Narada comes. अचानक नारद मुनि का वहां आगमन हो गया। This. ये क्या चल रहा है? He sees these two demigods. नारद मुनि ने इन दोनों देवताओं को देखा। The ladies, they see him. जो स्त्रियां थी उन्होंने भी जो देखा नारद मुनि को, They become embarrassed. तो वो थोड़ा शर्मिंदा हो गई। Immediately, they run to the shore and put their clothes on. तो तुरंत किनारे की ओर गई और अपने वस्त्र पहनने लगी। But the demigods didn't. लेकिन दोनों पुत्र ऐसे के ऐसे ही खड़े थे। And then Narada is looking at them very angry. नारद उनकी ओर देख रहे हैं क्रोध से। He said, "Oh." मैंने कहा, ओ, Perfect translation. थैंक यू। What? And he said, "Oh, you want to run naked? Oh, okay, you become trees. तो तुम ऐसे ही नग्न रहना चाहते हो तो पेड़ बन जाओ। I curse you, you become trees." मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पेड़ बन जाओ। As soon as they got cursed, they came to their senses. जैसे ही श्राप मिला तो ठिकाने आ गए। They realized तो उनको समझ में आया कि गड़बड़ हो गई हमसे। he's adding something to the story. Okay. All right. Continue to add. Long as it's not against the story. So they realize, oh, we made a big mistake. So now they're cursed and they're really in trouble. तो उनको समझ में आया कि हमसे जो है बड़ी गलती हो गई और अब श्राप मिल गया है तो मुसीबत में पड़ गए। So they become humble. तो एकदम विनम्र बन गए And they start praying to Narada. और नारद मुनि से करने लगे प्रार्थना, Please forgive us, don't curse us. हमें क्षमा कर दीजिए, अपराध क्षमा कीजिए और शाप मत दीजिए। Narada says, too late. नारद ने कहा बहुत देर हो गई है तो, Because once you give a curse, you can't take it back. क्योंकि एक बार जब शाप दे दिया वो तो उसको वापस नहीं ले सकते, But you can modify it. लेकिन उसको थोड़ा हम समायोजन कर सकते हैं। He said, all right, just you become trees. ठीक है, आप पेड़ तो बनेंगे ही, But in the courtyard of Nanda Maharaj. जी वो, लेकिन नंद महाराज के आंगन में पेड़ बने। After 100 years, the Supreme Lord will free you from your tree body. और 100 साल जब हो जाएंगे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपको एक वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाएंगे। So that was the curse. तो ये था श्राप। और इसके बाद नारद मुनि प्रस्थान किए। Now the story goes on. लेकिन कहानी आगे बढ़ती है। Pride. अहंकार। There's different kinds of pride. अलग अलग प्रकार के अहंकार हैं। Pride if you're born in a nice family. अच्छे परिवार में जन्म हुआ तो उसका अहंकार। Pious family. पुण्यवान परिवार। Rich family. अमीर परिवार। If you're beautiful. यदि आप सुंदर हैं उसका अहंकार। Intelligent. यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं उसका अहंकार। Have a nice position. यदि आपकी कोई बहुत अच्छी स्थिति है, पद है। If you control other people. जहाँ पे दूसरों का नियंत्रण आपका है। Easy to become proud. तो आसानी से अहंकार आ ही सकता है। So these demigods, they were the sons of Kuvera, the richest of all the demigods, so they were very proud of their position. तो ये जो दोनों पुत्र थे, ये सबसे अमीर देवता कुबेर के पुत्र थे, तो उनको बड़ा अहंकार था अपने ऐश्वर्य का। Now the scriptures give some conclusion. तो अब जो शास्त्र हैं इसके आधार पर कुछ सिद्धांत देते हैं। It explains. और समझाते हैं। Out of all of the prides, सारे प्रकार के जो अहंकार हैं, all of the different ways that people can become proud, जिस प्रकार से लोगों के अंदर अहंकार आता है जिन कारणों से, what is the most difficult pride to get rid of? तो सबसे जो बड़ा अहंकार है जिसे मुक्ति पाना कठिन है वो कौन सा है? And the answer is the pride of wealth. और उसका उत्तर है पैसे होने का जो घमंड है उससे मुक्ति पाना कठिन है। Those who are wealthy, very difficult to make them humble. जिनके पास ज्यादा पैसा है तो उनके लिए बड़ा कठिन है कि झुक पाना। At least in the West, anyway. I don't know. In India, maybe
different, but in the West, forget it. भारत में पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन विदेशों में तो जिनका पैसा है वो तो फिर अहंकार में ही रहते हैं, भूल ही जाओ। So, therefore, becoming poor is a good way to kill that pride. तो गरीब होना, गरीब बन जाना उनके लिए अच्छा तरीका है उनके अहंकार को चूर चूर करने का। Now, the cowherd boys, cowherd men actually, they heard the trees fall because it made a big noise. तो ग्वालवाल जो थे, जब वृक्ष गिरे तो उनको पता चला कि इतने बड़े वृक्ष गिरे, इतनी आवाज हुई, तो पता चला। And they were thinking, some demon is coming. और वो सोच रहे थे कि अरे कोई असुर आ रहा है लगना। They all became fearful. सब डर गए हैं। And after some time, everybody came to the spot where the trees were. लेकिन कुछ समय बाद सभी जो है मौका वारदात पे पहुंचे। And Krishna, little Krishna, he's right in the middle of the trees. और कृष्ण जो है वहां बिल्कुल पेड़ों के बीच में है। Still tied to the grinding mortar. अभी भी बंधे हुए हैं उखल से। And the cowherd men were thinking, how did these big trees fall? सोच रहे हैं क्या हुआ, ये पेड़ गिरे कैसे? And some of the cowherd boys were there and they said, Krishna knocked it down. और कुछ ग्वालवाल थे, उन्होंने कहा एक कृष्ण ने ही इनको दोनों को धराशायी कर दिया है। Oh, these children, they make up stories. और ग्वालवाल हंस रहे हैं कि अरे ये क्या बच्चे कहानी बनाते रहते हैं। And the boy says, oh no, Krishna, he was running and he caught the trees and boom, they fell. लड़कों ने कहा अरे नहीं नहीं, कृष्ण ही दौड़ रहे थे वृक्षों की तरफ, एकदम आवाज की बूम और एकदम पेड़ गिर गए। And then they started thinking, since Krishna's been here, so many unusual things are happening. Maybe it's true. ग्वालवाल सोच लगे अरे जब से कृष्ण आए हैं तो अजीब अजीब घटनाएं वृंदावन में हो ही रही हैं, हो सकता है ये बात भी सच हो। So then his father comes, Nanda Maharaj. तब उनके पिता नंद महाराज वहां पहुंचे। And he unties Krishna because he's in Vatsalya. और क्योंकि वो वात्सल्य रस में है तो उन्होंने कृष्ण को तुरंत खोल दिया। And Krishna is happy, he jumps on the lap of his father. He says, Father, I want to stay with you. कृष्ण बहुत खुश हो गए, पिताजी गोद में छलांग लगा के बोलते पिताजी मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। But then his father says, well, what about your mother? पिताजी लेकिन फिर बोले कि अरे तुम्हारी माँ के बारे में क्या? She's over there. वो तो वहां खड़ी है। And she's crying. रो रही है। Go to her. उनके पास जाओ। No. कृष्ण बोलते नहीं। Krishna was mad at his mother because he tied her up. कृष्ण जो है नाराज थे अपनी माँ से क्योंकि उन्होंने बांध दिया था। But then Nanda said, oh, your mother is suffering so much. She loves you. Go to your mother. Krishna can't refuse his father. नंद महाराज लेकिन बोले कि देखो तुम्हारी माँ बहुत परेशान है तो तुम उनके पास जाओ, तुम्हें बहुत प्यार करती है। तो Krishna runs. तो कृष्ण अपने पिता को मना नहीं कर सकते, बस माँ की तरफ दौड़ते हैं। Comes to his mother. आते हैं उसके पास। She goes like this. और इस तरह से माँ बाहें फैलाती है। Krishna smiles. कृष्ण मुस्कुराते हैं। He jumps on her lap. और माँ की गोद में कूदते हैं। Happy ever after. उसके बाद जैसे पहले वैसे ही हमेशा खुश। So that's a beautiful pastime that illustrates this particular month, Krishna is Makancha, and how he gives pleasure to his devotees by performing all kinds of mischievous activities. तो इस विशेष महीने में ये विशेष माखन चोर लीला हुई थी और इसके द्वारा कृष्ण प्रदर्शित करते हैं कि वो किस तरह अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, इस तरह अपनी शरारतें करके। Sitam prasangam mamamirya vanavam vidam bhavanti ritkarna rasayana katha. So it says in the scriptures that hearing the glories of the Lord in the association of devotees is rasayana katha. That katha that is so sweet to the ears and gives pleasure to the heart. तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि भक्तों के संग में जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो वो जो कथा है वो रसायन कथा है, जो कि कानों को भी आनंद प्रदान करती है सुनने में और हृदय को जो है आनंद प्रदान करती है। Out of all the activities in devotional service, the most powerful and most direct
activity for awakening our love for Krishna is to hear about his wonderful pastimes. भक्ति में सेवा में जितने भी जो अंग हैं उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष अंग है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। To chat about the glories of the Lord, to hear about the glories of the Lord, to speak the glories of the Lord to others. भगवान की महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान की महिमाओं का श्रवण करना, दूसरों को भगवान की महिमा के बारे में बताना। This is the essence of bhakti. ये है भक्ति का सार। Because the more we hear about Krishna, क्योंकि जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, the more we get attracted to Krishna. उतना हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते चले जाएंगे। The more we get attracted to Krishna, the more we get attached to Krishna. जितना आकर्षण बढ़ेगा कृष्ण के प्रति, उतनी आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। Attached to Krishna, then this material world becomes very unpleasant place. जितना कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही ये भौतिक जगत हमें लगेगा कोई। We lose our attraction for Maya. माया के लिए हमारा आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। So it's recommended Satatam Kirtayanto Mam to hear about Krishna pastimes, especially his pastimes in Vrindavan. तो ऐसा आता है भगवद गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण की लीलाओं को सुनना, विशेष रूप से उनकी वृंदावन लीला। Nandikeya Nandavara जय कन्हैया लाल की, Hatti Palak हाथी घोड़ा Palaki जय कन्हैया लाल की, Hatti Gola Palaki जय कन्हैया लाल की, Jai Kanaya Lalaki हाथी घोड़ा पाल की, Nandikeya Nandavarya जय कन्हैया लाल की, Jai Kanaya Lalaki घोड़ा पाल की, Hatti Gola Palaki. जय कन्हैया लाल की। Yeah, so this is Krishna. Everything about him is so wonderful. तो ये है कृष्ण, उनके बारे में सब कुछ बहुत अद्भुत है। And Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, they came to give us Krishna. और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमें क्या देने आए? कृष्ण देने आए। And the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। Chant, chant. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Ah, very good. बहुत. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। So nice, just to hear everyone chanting. It makes music. कितना अच्छा है, सभी लोग जब इस तरह हरिनाम कर रहे हैं, ये एक संगीत है। And we can chant. The more you chant, the more you chant. तो इस तरह हम जितना अधिक जप करेंगे, उतना अधिक हम जप कर सकते हैं। Prabhupada, someone asked Srila Prabhupada, some reporter, he said, Swamiji, what do you get from chanting? एक बार एक पत्रकार आते हैं श्रील प्रभुपाद के पास, बोले स्वामी जी, ये जप करने से, कीर्तन करने से आपको क्या मिलता है? Prabhupada said, we get chanting from chanting. तो जो कीर्तन करेंगे उससे हमें और अधिक कीर्तन की प्राप्ति होती The more you chant, the more you want to chant. है। जितना आप जप करेंगे उतना आप और जप करना चाहेंगे। Then you forget about Maya. फिर माया को तो आप भूल ही जाएंगे। Who's there? इस तरह माया आएगी। कौन है? It's me, Maya. मैं हूँ माया। Oh, come back tomorrow. ठीक है, कल आना। Who's there? फिर इस तरह माया खटखटाएगी। कौन है? It's me, Maya. You told me come back tomorrow. मैं हूँ माया, कहा था कल आना। I said tomorrow. Not हाँ हाँ, तो मैंने कहा उसे कल आना, आज नहीं। It's always today. It's never tomorrow. तो आज जो है वो तो आज ही है, कल तो है ही नहीं कभी। So we can keep Maya away. Just tell her do something else. I'm busy. तो इस तरह माया को दूर रख सकते हैं कि तुम कुछ और करो, मैं व्यस्त हूँ। And then life is nice. तो फिर जीवन अच्छा है।
one who remembers Krishna always is always with Krishna. जो हमेशा कृष्ण को स्मरण करते हैं हमेशा कृष्ण के साथ में ही है। And when you're with Krishna, then you're happy. और जब आप कृष्ण के साथ में हैं तब आप वास्तव में प्रसन्न हैं। So there's many wonderful pastimes of Krishna. तो इस तरह कृष्ण की बहुत बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। So we have no shortage of Lila. तो लीलाओं की तो कोई कमी नहीं है। We can do it. We can just hear all day long. दिन भर हम श्रवण कर सकते हैं। And you're in the spiritual world. और उसके बाद आप कहाँ आध्यात्मिक जगत में हो जाते हैं। What about prasad? लेकिन प्रसाद में क्या करेंगे बात? Don't worry, Krishna will give you prasad. He'll say, "Oh, they're chanting my glories. Here, take a little prasad." प्रसाद की चिंता मत करो। भगवान सोचेंगे अरे मेरी महिमा की कीर्तन में लगा है, ये लो प्रसाद मेरी तरफ। So Krishna always provides. तो कृष्ण हमेशा सब कुछ प्रदान करते हैं, चिंता मत कीजिए। Oh, I'm supposed to go to sleep. ओह, मुझे तो सोना भी है ना। But I'm chanting Krishna's glory, so I'm not tired. लेकिन मैं कृष्ण की महिमा गा रहा हूँ तो थका तो मैं हूँ ही नहीं। When you stop, then you get tired. जब आप रुक जाएंगे महिमा गाने बंद करेंगे तभी थकेंगे। How many of you played hide and seek when you were kids? छुपम छुपाई किसने किसने खेला है? Oh, the favorite game of all kids, right? सब बच्चों का पसंदीदा खेल। So Krishna and Radharani and the gopis, they used to play hide and seek. तो कृष्ण राधा रानी गोपियां ये भी छुपम छुपाई खेलते थे। So Krishna's there, Radharani's there, the gopis are there. कृष्ण भी हैं, राधा रानी भी हैं, गोपियां भी हैं। And Radharani, she has to hide, and all the other gopis and Krishna, they hide, and Radharani has to find everybody. तो कृष्ण और सारी गोपियां छिप जाती हैं और राधा रानी को ढूंढना है सबको। So Radharani's looking this way, that way. राधा रानी इधर देख रही, उधर देख रही, ढूंढ रही। But when she gets close to the gopis, they laugh. लेकिन जब गोपियों के पास पहुंचती है तो गोपियां हंसने लगती हैं। And she catches all the gopis because they love her so much that when she gets close, they just start laughing. तो जब राधा रानी गोपियों को पकड़ लेती है, क्योंकि राधा रानी गोपियों का इतना प्रेम है, जैसे वो पास में आती है गोपियां हंसने लगती हैं, राधा रानी को पकड़ लेती है। But she can't catch Krishna. लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाती हैं। Every time she gets close, he changes position. जैसे ही कृष्ण के पास में पहुंचते हैं, कृष्ण की स्त्री बदल लेते हैं। She's thinking, "Where's this rascal? और कहाँ गया भगवान? He's going farther away into the mountains." और कृष्ण आगे और आगे आगे छिपते चले जाते हैं। She's still looking, फिर राधा रानी ढूंढ ही रही है, can't find him. ढूंढ नहीं पा रही है। And then she thinks, I have a way. ओह, एक रास्ता है ढूंढने का, वो सोचती है। So she uses the ultimate weapon. तो अपना ब्रह्मास्त्र को चलाती है। She starts singing. वो गीत गाने लगती है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Krishna hears, oh, this thing is so nice. He freezes, he can't move, he's stuck. तो कृष्ण एकदम सुनते हैं, अरे कितना अच्छा गा रही राधा रानी। कृष्ण वहीं पे एकदम रुक जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। And then Radharani says, I got you. राधा बोलते हैं, देखो मैंने तुमको पकड़ लिया। And Krishna says, you cheated. कृष्ण बोलते हैं, पकड़ा नहीं, आपने धोखा दिया है। He says, no, you just don't like to lose. राधा बोलते हैं, नहीं, तुमको तो हारना पसंद नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। Now these are the games that they play in the spiritual world. ये ऐसे खेल हैं जो आध्यात्मिक जगत में खेले जाते हैं। One day, Krishna killed a demon. एक दिन कृष्ण ने असुरों को मारा। Big demon, a big one. Ooh, he was ferocious. बहुत बड़ा असुर, एकदम भयानक। All the Calcutta boys came around Krishna. Hey, Krishna, how'd you do that? Wow, that was a big demon. I couldn't kill him. सारे ग्वाल बाल कृष्ण बोलते, अरे कृष्ण कैसे मार दिया असुर को, क्या बड़ा असुर था, मैं तो इसको मार ही नहीं पाया। Yesterday I beat you in wrestling. अरे कल तो मैं तुमको हरा दिया कुश्ती में कृष्ण, but I couldn't kill it. लेकिन उस असुर को मैं नहीं मार पा रहा हूँ, तुमने मार दिया। Another boy says, yeah, I took your lunch and you stopped crying. yeah.
हाँ हाँ, दूसरा बोलता है कि अरे कल मैंने तुम्हारा प्रसाद खा लिया तो तुम रोने लग गए। So they're all guessing. तो सब ऐसे अनुमान लगा रहे हैं अपना। And one boy says, it's his mother. तो एक बालक आके बोलता है ये उनकी माँ का कमाल है। Gives them a special demon killing mantra. इनकी माँ ने कृष्ण को असुर मारक एक मंत्र दे रखा है। Chants that mantra and then he kills the demon. जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं असुर को मार जाता है। Another boy says, not exactly. दूसरा ने बोला अरे ऐसी कोई बात नहीं, It's his mother. ये उनकी माँ तो है ही। He puts these armlets and amulets on his legs and arms, and he has all of these mantras inside, and he's powerful. बाजूबंद है ना, कमरबंद, ये जो बांध रखे हैं इन सब के अंदर मंत्र की शक्ति भरी हुई है। So इससे शक्ति आ जाती है। Krishna is just quiet. He's just listening to them, not saying anything. कृष्ण तो शांत बैठे हैं, सुन रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। Then he speaks. फिर कृष्ण बोलते हैं, Want to know? जानना चाहते हो? Yeah. हाँ। They all get excited. Krishna will tell us how he killed the demon. सब उत्तेजित हो जाते हैं, कैसे कृष्ण असुरों को मारते हैं। Well, when I was born, हाँ, जब मैं पैदा हुआ था, there was a very, very powerful sadhu came to see my father. एक बहुत बहुत महान साधु मेरे पिताजी के पास आए थे। He had a secret meeting with my father. और उन्होंने एक गुप्त रूप से चर्चा की थी मेरे पिताजी के साथ। He told my father, this boy is as good as Narayan. और उन्होंने मेरे पिताजी को बताया कि ये जो लड़का है ये नारायण की तरह ही शक्तिशाली है। In fact, he is Narayan. वास्तव में बात तो ये है कि ये नारायण ही है। So Krishna looks at his friends and he says, if you want to know, I'm God. तो कृष्ण बोलते हैं, अभी मित्रों के बोलते हैं, देख के जानना चाहते हो वास्तविकता, तो बात यह है कि मैं भगवान हूँ। And they all start laughing. He thinks he's God. सब के हंसने लगते हैं, अरे क्या सोच रहा है, सोच रहा है कि मैं भगवान हूँ। And they're all laughing and Krishna's laughing. तो कृष्ण भी ये सुन के हंस रहे हैं। They're all, oh, he thinks he's God. अरे सोच रहा है कि मैं भगवान हूँ। And then finally, after they get tired of laughing, they're laughing for a long time. तो बहुत लंबे समय तक हंसते ही रहते हैं। And then Krishna said, all right, let's go play. कृष्ण बोलते हैं, चलो अब ठीक है, अब चलते हैं, खेलते हैं। So this pastime happened in a place called Hashyavan. Hashya means laughter. तो ये जो लीला कहाँ हुई, ये हास्य वन में हुई। हास्य मतलब हंसना। Yeah, if you go there and hear that pastime, you will just keep laughing. That's all. तो वहां जाके ये लीला को आप श्रवण करेंगे तो हंसते ही रहेंगे। And so these are some of the sweet pastimes of Krishna. So many pastimes with his counter friends, with the gopis. Lalita, she sees Krishna, she says, you're always hanging out with your cowherd friends and you tell all stupid stories. तो You always start talking about something stupid. तो कृष्ण जो है, इस तरह कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बहुत सारी मधुर लीलाएं हैं गोपियों के साथ। और एक बार ललिता जो है कृष्ण को बोलती है, अरे हमेशा अपने ग्वाल बाल मित्र हैं उनके साथ बस घूमते रहते हो और फालतू की जो है कहानियां बनाते रहते हैं। When Krishna is with the cowherd boys, he's always playing games and they're always joking and they're always making fun of each other and wrestling and doing all kinds of things that boys do. तो क्योंकि कृष्ण जब रहते हैं अपने मित्रों के साथ तो कभी उनका खेलते रहते हैं, कभी कभी आपस में एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं, कुश्ती लड़ते रहते हैं, जो इस तरह करते हैं मित्र लोग। Prabhupada said, you can go to the spiritual world and you can play with Krishna. प्रभुपाद जी बोलते हैं, यदि आप आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो आप भी कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, but you have to qualify. लेकिन आपको बनना पड़ेगा योग्य उसके लिए। How do you qualify? कैसे योग्य बनेंगे? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, for Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Business Association. Maharaj, Maharaj, I have a question. Like, you said Vatsalya and Satya.
compared. Vatsalya rasa stays above Sakya rasa. All the rasas are equal, but the intensity of the sweetness is increased as you go from Dasya ras to Sakya ras to Vatsalya ras, and you come to the sweetest of all rasas, Madhurya ras. So they're all equal, but the sweetness increases. तो प्रश्न ये है कि महाराज आपने बताया कि वात्सल्य रस और साक्ष्य रस में साक्ष्य रस के जो श्रेष्ठ है मधुर वात्सल्य रस है। तो महाराज बता रहे हैं कि वास्तव में सारे रस समान हैं, लेकिन जो मधुरता की जो तीव्रता है, जैसे जैसे उच्च रस में जाएंगे शास्त्रीय सख्य में ज्यादा मधुरता है और उससे ज्यादा मधुरता है वात्सल्य में, उससे ज्यादा मधुरता है माधुर्य रस में, तो मधुरता की तीव्रता और अधिक है। हालांकि सभी रस समान है, लेकिन धीरे धीरे और मधुर होते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रश्न अच्छा Hare Krishna Prabhuji. And I want to know that when we are stuck in a condition when we don't know what to do, then what we can do. When I get anger issues and I know I can solve it easily, but can't hold that anger at that time. Then what to do? Yena Kena Prakarena Krishna Vena Krishna Yena Kena Prakarena Krishna Mana Nivesaya. In any case, just remember Krishna. All your problems will go. When you remember Krishna, then the problem is we don't remember Krishna. That's the problem. And when we forget Krishna, then so many things that can happen. तो प्रश्न ये है कि महाराज कई बार हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें किस परिस्थिति में, तो हमें क्या करना चाहिए। तो महाराज बता रहे हैं कि जब करो और ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशय, इसलिए किस करें कृष्ण को स्मरण करो। When we remember Krishna, then we say, "My dear Lord, please help." तो हमारी समस्या यह है कि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं। जब स्मरण करेंगे तो हम कहेंगे भगवान आप मेरी मदद कीजिए। And because when the devotee goes to Krishna, Krishna always reciprocates. और जब कृष्ण भक्त कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण हमेशा आदान प्रदान करते ही हैं। He may not solve your problem, but he'll give you peace of mind. हो सकता है कि समस्या का समाधान ना हो आपकी, लेकिन मन में आपको भगवान शांति प्रदान करें। And that's solving the problem also. और ये भी समस्या का समाधान ही है। Yeah, when you remember, because Krishna is the source of everything, he controls everything. So when you remember Krishna, you're connected to the source of all existence. So there's no problem. The problem is we're not connected to Krishna. तो कृष्ण जो है सारी परिस्थितियों के स्वामी हैं, सारे अस्तित्व उन्हीं से आए हैं। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो वो जो है आपको सही चीज सही मार्ग प्रदान करते हैं। समस्या यह है कि हम कृष्ण से जुड़ते नहीं हैं। The scriptures say two things you should always do. That is, you should always remember Krishna and you should never forget Krishna. शास्त्र कहते हैं कि दो चीजें हमें हमेशा करनी है, एक तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को मत भूलो। So these are the two most important things. Remember not to forget Krishna and remember to always remember Krishna. सारे शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण दो ही उपदेश हैं कि कभी को कृष्ण को मत भूलो, ये हमेशा स्मरण रखो, हमेशा स्मरण रखो कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रखना ही है। All of our problems are due to forgetfulness of Krishna. सारी समस्याओं की जड़ है कृष्ण की विस्मृति। When we remember Krishna, then even if there's some problem, the solution becomes available. कृष्ण का जब स्मरण करेंगे तो समस्या आएगी, लेकिन समाधान भी आ जाएगा। Krishna won't solve it for us, but he'll give you the intelligence how to deal with it, or he'll give you the peace of mind to accept it. हो सकता है कृष्ण स्वयं समाधान न करें, लेकिन हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कैसे समस्या का समाधान करना है, या हमें मन की शांति प्रदान करेंगे। प्रश्न है कि
कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, फिर भी कोई हमें गलत शब्द कहता है और ऐसी अवस्था में हमें बुरा भला कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? It depends who the person is. Someone close to you, someone, it's just any old person. If it's someone who's close to you, then you can discuss it. निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति आपको ऐसा कह रहा है। यदि कोई आपके बहुत करीबी व्यक्ति है तो वो आपसे कैसा कह रहा है तो आप उससे चर्चा भी कर सकते हैं। But remain peaceful. Don't get angry. लेकिन शांत चित्त रहिए, क्रोधित मत होइए। When you get angry, you block communications. क्रोधित होने से क्या होता है, हम बातचीत का दरवाजा बंद कर देते हैं। Then sometimes you just have to walk away. कभी कभी ऐसा है कि हो सकता है हम वहां से चले ही जाएं। And sometimes you have to discuss it. और कभी कभी हमें फिर चर्चा भी करनी होती है आपस में। Depends. If it's not important, then you just walk away. निर्भर करता है, यदि कोई बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो ठीक है। If it's something very important, maybe you can discuss it. My dear Mataji, what you're saying is very nice, but you're wrong. यदि कोई बात बहुत महत्वपूर्ण है तो चर्चा कर सकते हैं कि हे माता जी, आप जो कह रही हैं वो लग रहा है अच्छा है, लेकिन आप गलत हैं। So let me explain. तो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। So we have these problems. They come up with people. We have some problems. ऐसी समस्याएं आती हैं जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। We shouldn't become offended. We should become tolerant. तो हमें जो है इस तरह एकदम उसका अपराध नहीं लेना चाहिए, हमें सहनशील भी बनना चाहिए। Because people don't understand sometimes. Even if we're right, they don't understand. When you do. क्योंकि कई बार लोग ही नहीं समझते हैं, भले ही आप सही भी हो, वो लोग मान लो नहीं समझेंगे तो आप क्या करेंगे? If it's something important, then you have to discuss it. If it's not important, you can forget about it. कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तो चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए, वरना उसको भूल जाइए। We should practice humility, tolerance, pridelessness, giving respect to others. And that way we can chant Hare Krishna. हमें विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही हरिनाम कीर्तन संभव है। Living in the material world is difficult. भौतिक जगत में हम हैं, यही तो समस्या है, यहाँ रहना कठिन है। People will not understand you. लोग आपको समझेंगे नहीं। People will misunderstand you. और गलत ही समझेंगे। People will give you trouble for no reason. बिना कारण आपको कष्ट देंगे। You will give other people's trouble for no reason. आप भी दूसरों को कष्ट देंगे बिना कारण के। This is the way it goes. This is the material world. So if you put your heart into Krishna, then even if these things come, they don't bother you so much because you're with Krishna. भौतिक जगत ऐसा ही है, लेकिन यदि आप अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर देंगे तो फिर ये चीजें आती जाती रहेंगी, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हम तो कृष्ण के साथ आनंद में। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Mataji. हरे कृष्ण महाराज। Hare Krishna. धन्यवाद। प्रणाम सुप्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। महाराज, जो आपने क्लास दी आज दामोदर अष्टकम पे, मतलब जो भगवान की लीलाएं बताई, तो जैसे आप बोल रहे थे कि अगर हम कृष्ण की कथाएं सुनते हैं तो ऐसे लग रहा था महाराज की वाकई में हम लोग वो लोग पहुंच गए, और आपने मतलब पूरी लीला हम देख रहे हैं कृष्ण के सामने, और ऐसे लग रहा है कि इतनी फीलिंग आ रही थी कि वाह, कृष्ण कैसे मतलब लीला करते हैं। तो ये पूरा सिमरन होता था, तो मुझे लग रहा था कि वाह, बहुत ही अमेजिंग क्लास थी।
बस मुझे यही शेयर करना था महाराज। थैंक यू। So I just wanted to share this. श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री राम। प्रसाद ओके। महाप्रसादे गोविंदे नमो भगवते वैष्णवे पुण्यकृतं राजन् विश्वसौनाय शरीरा चौधरी जीवे विवेदी ससगरे कर्मजय जीवायते लोभो वयस दुर्मति नाथे चिता बोधिना संसरे कृष्ण बलदयमय कृष्ण बलदयमय हरिबाल जीव जाय स्वामी प्रसाद दिलो बाय सेनामृत का ओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेरणा को चैतन्य निधाय जय निवाय जय निधाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रसाद की जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।